अगर आज आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, आप किस चीज़ पे रुकोगे और कहाँ दिल लगाओगे? आप आज डेटिंग प्लेटफॉर्म पे हो, आपने हेलो हाय शुरू किया, वहाँ से जवाब आना शुरू हुआ। द मोमेंट कुछ होने वाला था, सडनली एक नया हाय आ जाता है। ओह, यहाँ तो डीपी और अच्छी है। हम ये कहते हैं इंडिया में, ओ वी आर कॉपिंग वेस्टर्न वर्ल्ड, डिवोर्सेज आर रैम्पेंट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, दिस इज व्हाट वी आर होल्डिंग हियर. If you say that, oh, this society has got 30% divorce rate or 20% divorce rates, they are rising. What you are not looking at is this society has women sacrificing at the 70% rate. They are still in that same marriage. They are being asked to compromise. It's a very wrong lens to judge a society. लोग कहते हैं कि you should have common goals, you stay attached. It's more important to have common values. Just because your parents want you to get married, do not get married for the heck of them. Parents will leave this planet someday. मैं पूरी लाइफ के लिए बोझ झेल रहा हूँ और वो मैं चाहता नहीं था, कोई और चाहता था, और जो चाहता है वो देख नहीं रहा, वो तो चला जा चुका है. In today's podcast, we have an author. A lot of you must have read his first book, I Too Had a Love Story. Author Ravinder Singh comes on the podcast and talks about a bunch of things, right from attention span, modern relationships, the dating culture, writing as a career, and much more. Tune in to this one. I've done all my school from Talcher. It's not very common to see people coming from that corner of the country to these corners. Like I've seen a lot of people settle there only. They don't want to go out. Odisha people तो from what I've experienced वहीं पे पैदा हुआ है, वहीं पे रहना है, वहीं पे करना है. Max they'll go out to like Bhubaneswar or like Bangalore थोड़ा थोड़ा करते हैं, but that's it. But I think it really hampered the एक्सपोजर या एम्बिशन या पर्सपेक्टिव बहुत वो लगता था मुझे. तो मतलब मुझे मज़ा नहीं आता था बिल्कुल भी. लाइक दैट्स लाइक वन पार्ट दैट आई डोंट एंजॉय टॉकिंग अबाउट. इवन आई टॉक्ड अबाउट दैट इन द I love talking about content. it. Yeah? Why is that? एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखा था उस जगह पे. बिलोंगिंग टू अ सिख फैमिली, ब्रॉट अप इन उड़ीसा, रीडिंग राइटिंग ओडिया, एक डिफरेंट कल्चर था. आई फील माई हार्ट इज still in Odisha. Like I relate more to Odisha people than I relate to metro ke log. So at the age of 26 is when I moved out of Odisha, went to Chandigarh because I wanted कि I have to go to my people. सरदारों के साथ, पंजाबियों के साथ. एक तो देखे ना 26 years, 27 years. लेकिन दिल बहुत ही कॉस्मेटिक थे. उड़ीसा में ना लोग शांत थे, रियल ज़्यादा लगते थे मुझे. मेट्रोज में लगता है कि इससे बच के रहना है, ये जो बोल रहा है वो तो नो है, हाँ को ना, ना को हाँ. लेकिन बहुत दिमाग लगाना पड़ता था इन मेट्रोज. कौन को तुम्हारी जेब काट जाएगा, कौन किसने क्या जाल बुना, यू जस्ट डू नॉट नो. पीपल वर लॉट सिंपलर इन ओडिशा. इफ़ यू से येस इट मीन्स येस, इफ यू से नो. और मेंटल एक्सर्शन इतना नहीं था वहाँ पे. हवा साफ थी, सिंपल चीज़ थी. आई वॉज ऑल्सो आई ब्रॉट अप नेक्स्ट डोर टू हिराकुद डैम, watching river Mahanadi, going to the dam area in the evening. It used to be the longest dam on the entire planet then, and it was so stone throws away from my place. So I felt nice. एक छोटी दुनिया थी. Maybe वो एक छोटा कुआं था जिसमें लगता कि ये तो अच्छी दुनिया. Like I had no dreams of going to New Delhi, forget New York. So when you start your journey from such humble background, and when you reach different parts of the world, you it makes you humble, it makes you grateful, it makes you thankful to come from that. There's a different way that people look down upon certain things. For example, my English was terrible. The schools that I went to, there were hardly an English medium school in 80s and 90s, and what they taught in the school was, the English teachers will talk about प्रोनाउंसिएशन का प्रोनाउंसिएशन इज़ प्रोनाउंसिएशन. सो आप पूरी इंग्लिश ही गलत सीखते हो आगे, एंड देन यू टर्न आउट टू बी एन ऑथर हु राइट्स इन इंग्लिश. सो दैट ट्रेजेक्टरी, ऑल ऑफ इट, आई थिंक द सिंप्लिसिटी ऑफ दैट प्लेस, छोटे ड्रीम्स, छोटा, एवरीबडी नोज एवरीबडी एल्स. ट्रू.
I kind of like that a lot. Like it. I'm a Gen Z, like I was born in 1999. Everyone around me is mostly Gen Z, Gen X, थोड़े हैं millennials maximum. I've seen that emotions in my generation is very very limited. And जो हैं भी it's very it's like suppressed somewhere deep inside. Like एक point के बाद हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता. अब मैं गाली दे दो, हाँ ठीक है चल, मत सिखा बाप को मत सिखा. That's the attitude that I've seen across people. बुरा ही नहीं लगता. Like सच में एक point के बाद लगता ही नहीं है कि emotions हैं ही नहीं. ऐसा क्यों? Like have you noticed that in the Gen Z new generation, next generation मुझे भी नहीं पता, वो तो और fast आगे जा रहे हैं. But why is this happening? Why are we so emotionless? जनरेशन को बहुत चीज़ें बहुत इजीली मिल रही है. मेरी जनरेशन में इंटरनेट नहीं था. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डू नॉट नो समथिंग, यू विल गूगल इट. फ्रॉम टिल द टाइम आई रीच माई कॉलेज, इनफैक्ट आफ्टर आई फिनिश्ड माई कॉलेज, आई डिड नॉट नो कि क्या गूगल करना है. 1995 इंटरनेट केम टू इंडिया. In 1999 colleges started adopting internet. In 2003 when I graduated, people were using internet largely for Yahoo chat rooms. Right. Little things that they were doing in their silos. But the generation that was coming out of the schools then, they knew, oh, it's on my fingertips. If it is not available like this, मतलब उसमें मुझे डालना ही नहीं है, मुझे अपने एफर्ट ही डालना नहीं है उसके अंदर. ये तो है. हमें क्या था कि उसके लिए जाना है, साइकिल चला के कहीं पे जाके आना है. व्हेन यू डू दिस मेनी टास्क ना, आप अपने आप एक अटैचमेंट ढूंढ लेते हो उसमें. आज तुम किस चीज़ में अटैचमेंट ढूंढते हो? अपनी कंपनी चलाने में, स्टार्टअप. दैट इज़ वन थिंग परहैप्स. करेक्ट, 100%. हमें उस वक्त बहुत सारी चीज़ों में अटैचमेंट ढूंढनी पड़ती थी. Starting from my bicycle to my raincoat, everything that you have to earn. I think people who have struggled a lot, limited, हमारे पास जो options होते थे उस time पे, they make you value things more. And it's not about money related thing. It's about accessibility. Does this thing even exist? Correct. Makes sense. So हमारे वहाँ पे उस era में trunk call आती थी. फोन्स बुक करने पड़ते थे इन एडवांस इफ यू हैव टू मेक एन ISD कॉल. इमेजिन टुडे इट्स लाइक टेक्स्ट किया खत्म. टेक्स्ट में वी आर ब्रेकिंग अप, मतलब फ्रॉम मूविंग ऑन टू ब्रेकिंग अप, एवरीथिंग इज सो फास्ट. तो जब आपकी लाइफ में वो ठहराव नहीं आता है और आप उस चीज़ को उतना अप्रिशिएट नहीं करते हो, उसके लिए उतनी स्ट्रगल नहीं करते हो, आप उसके साथ इतना अटैच भी नहीं हो सकते हो. There are different kinds of things that you are perhaps attached to, the new generation, which perhaps my generation wasn't attached to. Gaming. It was at a different level, but nobody would have thought gaming पे पैसा बनाएंगे. There are people, nobody would have thought कि मुझे अपने गेमिंग कैरेक्टर की जर्सी खरीदनी है और उसके लिए एक मेटावर्स. The whole world has changed. So perhaps those attachments are at a different, वो कहीं और मूव हो गई हैं. वो इमोशन से मूव होकर कहीं और चली गई हैं. फैसिनेशन बन गई हैं, aspirations बन गई हैं. But हाँ, I mean obsession बन गई in a way. If I look at firstly very good point, but now that I'm thinking about it, it's like our attention is going into basically us only now. Like everybody is like so focused on themselves. If they're a creator, they're just focused on कितने followers आए हैं, वो नंबर देखते रहते हैं वो. If they are an entrepreneur, वो दूसरा नंबर देखेंगे, कि followers का नंबर नहीं देखेंगे, बट कस्टमर का नंबर देखेंगे. If they are doing a job, वो देखेंगे दूसरे क्या कर रहे हैं, मैं किधर हूँ, मेरी सैलरी कितनी है. It has become such a comparative attachment now. Measurable. Yeah. It's like, क्योंकि अब डेटा आपके सामने है ना हर चीज़ का. अब आप किसी चीज़ को खरीदोगे, रिव्यू देके खरीदोगे अमेजन पे. मूवी कितनी चली बॉक्स ऑफिस. अब लोग भी सोचते हैं यार मुझे तो वो मूवी पसंद आई थी बट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतनी खराब है, मतलब एम आई द रॉन्ग वन. नहीं, मुझे उस लीग का पार्ट नहीं बनना. मैं भी यही बोलता हूँ कि मूवी बेकार थी. उस टाइम पे रिव्यूज़ नहीं थे, उस टाइम पे नंबर्स नहीं थे. उस टाइम फिर दिल से पूछते थे कि क्या ये मुझे अच्छा लगा, क्या मुझे इस इंसान के साथ बात करनी चाहिए, क्या मुझे इसका वीडियो देखना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इसके कितने फॉलोअर्स है. क्योंकि हम चीज़ों को क्वांटिफाई नहीं कर सकते थे, तो हम दिल की सुनते थे. दिमाग कहता है ना कि यार 2+2 4 हुआ कि नहीं हुआ. दिल तो कहता है कि 4 दिखने में खूबसूरत है तो मुझे 4 पसंद है. ठीक है, हम उस दुनिया में भी थे. अगर आज आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, आप किस चीज़ पे रुकोगे और कहाँ दिल लगाओगे? बिल्कुल सही बात है. मैं उस एरा में था. आई राइट रोमांस, आई रिटन बुक्स.
लव लेटर लोग लिखा करते थे. वो लव लेटर, अगर आप जो जीता वही सिकंदर देखो, तो वो ब्रेड के नीचे उसने एक लव लेटर डाला था उस लड़की का. इट हैड हैपेंड इन माई स्कूल्स. आई हैव पास्ड ऑन लव लेटर्स. व्हाट्सएप की दुनिया से कोई दूर. मतलब मुझसे भी पहले थी एक दुनिया जो कबूतर लेके जाते थे लव लेटर्स. बट मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, हम में एज डिफरेंस है. आई डोंट नो कि मैं कितना समझा पाऊंगा, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है. ये तो हमारे से भी था. तो मेरे स्कूल में भी होता था, मुझे याद है बचपन में. तो वो जो मेहनत करना, हैंड रिटन नोट किसी के लिए लिखना, जब आप वो लिख रहे होते हैं ना, उसमें आप फीलिंग्स उमेड़ देते हो कि ये जा रहा है. वो एक फिजिकल था. नो मैटर व्हाट, वो डिजिटल में मैं टेक्स्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन वो जो हैंड रिटन की जो बात है ना, आई ऑल्सो रन ए हैंडल कॉल विथ लव रविंदर. वहाँ मैं हैंड रिटन नोट्स डाल रहा होता हूँ. आपकी हैंड राइटिंग में वो जज्बात, वो इमोशंस निकलते हैं. जब आप गुस्से में आते हो फटाफट लिखते हो, जब आप प्यार में होते हो, जब आप एक डायरी को के पहले पन्ने पे लिखते हो, आपकी हैंड राइटिंग बड़ी खूबसूरत होती है. टुवर्ड्स द मिड लगता है कि चल भर देते हैं इसको यार. वो इमोशंस होते हैं हमारे. एक फ्रेश पन्ने पे मेरे क्या इमोशंस है, टुवर्ड्स द मिड अब समझ में आना बंद हो गया, फिर नीचे आप स्क्रिबल करना शुरू कर देते हो. ऑल ऑफ दिस क्योंकि ऑप्शंस इतनी अवेलेबल हो गई हैं, चीज़ें और डिफिकल्ट हो गई. हमें लगता है कि ऑप्शंस आइडियली should bring a lot of value to you. You would any day want options. But let me also tell you that these options also bring distractions. आप आज डेटिंग प्लेटफॉर्म पे हो, आपने हेलो हाय शुरू किया, वहाँ से जवाब आना शुरू हुआ. द मोमेंट कुछ होने वाला था, सडनली एक नया हाय आ जाता है. ओह यहाँ तो डीपी और अच्छी है, लेट्स कंटिन्यू विद द कॉन्वर्सेशन. सो एक रूम में अगर मुझे उस टाइम पे एक खरगोश हुआ करता था, आज 10 खरगोश हैं. And you are given the task that you have to catch one rabbit, Ravinder. When there was one rabbit in the room, I was so focused, I was attached. Now, every 30 seconds I see which is the closest rabbit to me. The moment I go there, somebody else is distracting. That's what is happening. So, ideally, मैं अपने फायदे की कोशिश कर रहा हूँ कि nearest rabbit, but उस चक्कर में मैं कहीं नहीं रुक पा रहा हूँ. And this is what the lack of, ये हमारा attention span हो गया, ये हमारा emotions. आई एम नॉट सेइंग दिस इज गुड और बैड, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ. बट हाँ, इमोशंस, डिस्ट्रैक्शंस is the reality, attention span is the reality. The answer is yes. But then digital revolution is reducing the attention span, increasing options, but at the same time, because increase in options, as you mentioned, like it's good or bad, it's hard to tell, because I had this question as well, like you have so many options today in terms of relationship as well, like swipe left, swipe right, दुनिया भर का options है, खत्म ही नहीं होंगे. It's very difficult to decide where to stop. And even if you stop, you're like, यार losers curse, winners curse. हाँ, winners curse हो गया. And then when like there's so much out there in the world. Yeah, FOMO, correct. It's paralysis all the time. It is. I'll tell you, a footwear brand, they were talking about the shoes that they bring out. And they were talking about why do they bring limited options, but all of them are like very classy as per them. And somebody had put them a question कि look at Nike, Adidas, जब आप जाते हो autumn collection, ये collection, वो collection आ रही है, wall भरी हुई है. And then this person said, मैं सिर्फ 6 लेके आता हूँ. आप 6 क्यों लेके आते हो? Is it the crunch of money? Is it what? No. I do not want my customer to enter a phase wherein he's taking more than 2 minutes to decide कि मुझे ये वाला चाहिए. I will make damn good 6 kinds of shoes. But मैं उसका अच्छा ये attention span एक चीज़ है, and spoil for choices will lead to a certain level of paralysis. और लोग सोचते हैं छोड़ यार मुझे समझ नहीं आ रहा. ना, दिस इज अ ह्यूमन बिहेवियर. छोड़ यार मुझे समझ नहीं आ रहा, इनमें से कोई एक तो है जो मुझे पसंद आएगा, लेकिन कौन सा है मुझे अभी नहीं आ रहा, अभी छोड़ देती हूँ, बाद में किस दिन आऊँगी. करेक्ट. अब बिकॉज ऑफ सो मेनी चॉइसेस, somebody walked out of your door who had come knowing that you are a great brand, who is aware that what she wants is available here, and yet because she could not decide and arrive at that one फुटवेयर जो उसको बाय करना है, एंड शी थिंक्स अबाउट हर मनी. दिस पर्सन, या तो होता है ना कि सोचना नहीं यार ये भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, वो भी हर तरह के लोग हैं. बट समबडी हु वैल्यूज हिज और हर मनी इज अनेबल टू डिसाइड. सो आई थिंक द इफ आई वर टू डू समथिंग, आई विल ब्रिंग इन समथिंग इन लिमिटेड एडिशन. उतनी ही चीज़ें दिखाओ, अच्छी दिखाओ, एंड ट्राई टू कन्वर्ट दैट इन टू योर सेल्स.
बहुत सारा कुछ मैं नहीं करना चाहता हूँ. दैट डजंट मीन जो लोग बहुत सारा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं. हर तरह के लोग हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर आर समबडी हु विल से मुझे ये भी दे दो वो भी दे दो. अच्छा डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तीनों दे दो यार, तीनों पैक कर दो. गुड फॉर दैट ब्रांड. बट द वर्ल्ड इज़ वेरी डाइवर्स. यहाँ हर तरह के सप्लायर, हर तरह की डिमांड, हर तरह के बायर्स बैठे हुए हैं. What is your solution to this take though? Like guys and girls in relationship and who are thinking like there's so many options and there's this fight and they're like हो गया और नहीं करना. Like it's so easy. The friction has reduced so much to break up and just to move on. वो फ्रिक्शन था ही नहीं पहले. एज यू मेंशन एक ही है लाइक अरे यार चलो ठीक है सॉर्ट करना ही पड़ेगा. कोई तरीका नहीं. दैट्स हाउ थिंक राइट. पहले ढूंढने के ऑप्शंस इतने कम थे ना यार. एक स्कूल में चलो एक लड़की इतना एफर्ट मार के मिल भी गई, ठीक है. अब आपको भी पता कि सेकंड मिलना बड़ा मुश्किल है. बिकॉज एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था एक रिलेशनशिप पे आने के लिए. पता नहीं कितनों से लड़ना पड़ता था. ऑल दोज मूवीज DDLJ टाइप्स वो वही बताती हैं कि इतना डिफिकल्ट है प्यार पाना. अब पता है कि इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स. ये नहीं हुआ तो कुछ और हो जाएगा. मुझे लगता है कि माई एडवाइस टू देम इज कि देखो, इफ़ यू मूव ऑन फ्रॉम हियर टू समबडी एल्स, what is going to stop you from moving that person to somebody else, and what is going to stop the other person from moving from you to somebody else? Itna to let's understand the playground first. Okay. Now somebody like me who would also say कि मैंने इतना बताना था, इतना बता दिया. Let them fail. आज की जनरेशन को ना आप बता के जोर ज़बरदस्ती से रोक नहीं सकते हो. मुझे लगता है कि let them fail once. Maybe they will fail the second time. Third time में एक conversation होनी चाहिए. Why do you think this did not work out? And I'm not saying कि आप गलत हो या वो गलत है, जो भी. Look at your relationship from a third person's point of view. Somebody proposed, somebody accepted, somebody broke up for whatever reason. And it's okay to break relationships if they are not working. The problem is, are you now willing to find another relationship? Because if you say कि मुझे तो सिंगल ही रहना है, that also is a great choice. You go ahead. But if you feel no, I cannot be single, I need to find a relationship, then my idea is, can we please do an analysis why the previous relationship did not work out? What were you missing? What were the questions that you should have asked yourself so that the next time ये ना हो? और हर बंदा यही कहेगा कि यार मेरे पार्टनर की गलती थी. Nobody is there to accept that. I think an honest communication with yourself. हाँ यार, I was the one who was just blown by the fact that he was tall, dark and handsome. मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था कि उसकी नेचर कैसी है, whether he respects women or not, whether he values women, it goes for both gender, whether she is going to be that possessive kind of girlfriend कि मैंने किसी और लड़की की फ़ोटो क्यों लाइक कर दी और उस पर maturity level. ये सब जो अनसीन है ना, जो परसीव किया जाता है उसकी सेंस नहीं होती है. जो हमें दिख रहा होता है आंखों को, हम उसके पीछे भाग रहे होते हैं. सो मे बी लेट्स डू एन एनालिसिस एंड फिगर आउट व्हाई डिड दिस नॉट वर्क आउट एंड व्हाट डू यू नीड टू चेंज इन यू सो दैट यू आर बेटर प्रिपेयर्ड द नेक्स्ट टाइम. इफ the partner was not compatible, what are the questions that you should be asking at the first place? Let's talk about your spending habits. Let's talk about your aspiration, your career, what is important to you. होता क्या कि हम मान के चलते हैं कि अच्छा मुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया है, अब मैं जो चाहता हूँ वैसे रहता हूँ. नहीं, आप जैसा चाहते हो वैसे आप एज ए स्टैंड अलोन आप रह सकते हो. बट नाउ व्हेन यू आर ब्रिंगिंग समबडी ऑन to the table, it's about what both of you want. Those conversations are taken a backseat. See, I also come from, I've seen so many eras. 80s की बात करूँ, arranged marriage होती थी. 90s people were struggling about love marriages. This is where DDLJ kind of movies were coming up. Early 2000 we talked about live-in relationships आ गई हैं वहाँ पे. The next decade was about LGBT. अच्छा पहले तो लड़का अच्छा तुम लड़के कंधे पे हाथ रखते हो, like तो एक डिफरेंट परसेप्शन था. आई वॉज वर्किंग इन यूरोप फॉर सम टाइम एंड दे वर लाइक, ओ इंडिया इज़ वेरी मॉडर्न, दिस इज़ 2006, यू गाइज शेयर अ रूम टुगेदर. आई सेड रेंट बचाने के लिए दो लड़के से इकट्ठे रह रहे थे. ये कल्चर था. सो वहाँ पे ऑपोजिट कल्चर था. व्हेन आई गॉट टू डू माई IT जॉब देयर इन यूरोप, आई फिगर्ड आउट कि ये तो बहुत कूल है. यहाँ पे लड़के लड़कियाँ इकट्ठे रहते हैं, लाइक दे शेयर अकोमोडेशन. यू गाइज आर मॉडर्न. दे सेड नो, बट सो दैट वाज द कल्चर क्लैश. तो इतनी सारी एरा मैंने देखी है.
कि पहले so the whole chronology was marriage, sex and then love. अरेंज मैरिज हो जाएगी, सुहाग रात हो जाएगी एंड देन लव. अब तो चीज़ें चेंज हो गई है कि वन नाइट स्टैंड फर्स्ट, और अगर इमोशंस रहे और लव में पड़ गए तो शायद शादी भी कर लेंगे. सो थिंग्स हैव चेंज्ड बिग टाइम. अगेन पीपल आर दिस थॉट प्रोसेस कि ये नहीं तो कोई और सही. ये ना हमें बहुत सारी चीज़ों के जो एक फ्लेवर है ना, मज़े, वो लेने से रोक रहा है. ये सोच कि समथिंग एल्स इज देयर फॉर मी. It is not letting you enjoy what you have right now. That is the problem. Moving on is not a problem. I'm telling you, तुम्हारे पास किसी चीज़ की एक इतनी बड़ी वैल्यू वाली चीज़ है, तुम उसको पूरी कंज्यूम किए बिना कहीं कहीं से मूव कर रहे हो. Should women be financially independent? My answer is yes. 100%. They are human beings. It's been long due that their fair share should have arrived long time back. And if the outcome of this is that now the women are talking about, even I want to live our life, I want to have a say in our relationship, it's fair point. And if the aftermaths of women finding their financial independence is that she's not going to adjust or she's not going to make as many sacrifices as she used to make at one point in time, we got to live with that. It's fair deal. हम ये कहते हैं इंडिया में, ओ वी आर कॉपिंग वेस्टर्न वर्ल्ड, डिवोर्सेस आर रैम्पेंट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, दिस इज व्हाट वी आर होल्डिंग हियर. आई थिंक टू जज अ सोसाइटी फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ relationship, divorces or marriage is kind of a wrong mechanism to judge a society. If you say that, oh, this society has got 30% divorce rate or 20% divorce rates, they are rising, what you are not looking at is this society has women sacrificing at the 70% rate. They are still in that same marriage. They are being asked to compromise. It's a very wrong lens to judge a society. I think the lens to judge a society is, are people getting to live the kind of lives they want to live and move on from the life that they are not comfortable living. We have got one life. अब आप इस पूरी की पूरी चीज़ को अगर आप इस लेंस से देखेंगे कि let me judge this society based on the divorce rate, that's a very wrong way to, it's a very myopic way to look at it. Because if you argue with me that I want to choose to look at the society through this lens, then my counter response is, so far you were looking at this society from the lens of it's okay for one gender to compromise, to make all the sacrifices. That's a wrong lens to look at it. True. The lens should be, am I happy living my life in this country, in this society? That is my parameter. और होता है यार, लोग चेंज हो जाते हैं. ह्यूमन बींग्स इवॉल्व. आपको आज नहीं पता है कि आप 5 साल पहले क्या सोचते थे, आप आज क्या बन जाओगे. आपको आज नहीं पता कि आप 5 साल बाद क्या बनना चाहते हो. आपको आज ये पता है कि 5 साल पहले मैं क्या सोचता था. सॉरी, आई सेड इट रॉन्ग. आपको ये पता है कि 5 साल पहले मैं क्या सोचता था और आज मैं वो नहीं हूँ. एंड आई एम टेलिंग यू, आज जो तुम सोच रहे हो ना आयुष अपने बारे में, आज से 5 साल बाद यू विल सरप्राइज योरसेल्फ कि यार 2002-3 में मैं ये प्लान बना रहा था. लुक एट मी इन 2028, एवरीथिंग चेंज्ड. 100%. आई एम प्रीटी श्योर व्हाट यू आर डूइंग नाउ यू वुड नॉट हैव प्लान्ड 10 years back in your life. 2 साल पहले नहीं पता था. So human beings will evolve. Yeah. And don't hold each other responsible that because of you, I'm going to, live this ruined life because you chose to end this relationship. I would rather appreciate the fact that, okay, we got together, we took those vows, we had felt something. And for whatever reason, if you are not feeling it, I cannot put a gun on your head and make you feel that way. Correct. What I can do is, of course, I can put a gun on your head and tell you that तुम इस रूम को छोड़ के कहीं नहीं जाओगी पूरी जिंदगी तक. I can do that. It's illegal, but if I want, I cannot make you fall in love with me. And if I cannot make you fall in love with me,
लव इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग. अगर मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए वो प्यार दिखेगा नहीं, फिर मैं तुम्हें यहाँ पे रख के क्या करूँगा? क्या लेने दो जो जाना चाहता है, रोक के भी वो कौन सा तुम्हारा हो जाएगा. एज सिंपल एज दैट. And there's this concept of, single individuality versus togetherness. So it's also very difficult to play around that sector wherein, like, let's say that male person as an individual, his identity, his wants, his work, and when he's with that, his partner, or the other way around, they are like, they're like one individual, one soul, or whatever. Right. Their goals, and then that's very different. Sometimes it's I versus us. I versus us, exactly. And it's like I versus us versus I. Like, idhar ka hai, and of course the us is common. Yeah. Idhar, what do you recommend to, like, how do you deal with this part? Because sometimes these two eyes can be separate, and it's not overlapping. मुझे लगता है कि every couple should have some part of their own private life. कि ये मेरा private काम है. This part is totally to be done by me. Okay. I believe in the idea of, in spite of being in a relationship, I need my me time. And it is not us time. It is my me time. Yeah. If I imagine living with a girlfriend or wife or anybody for that matter, I would love to wake up and not be bothered. Be left in my room, having my cup of tea, ideate. Communication is the key. What do you want? How do you feel? Most people do not talk about how do you feel. Tell me, how are you feeling? Forget it, वो politically correct है कि नहीं है, logically correct है कि नहीं है. How are you feeling? When you provide these windows to your partner to open up and be himself or herself, you make them feel that what you're going through is being valued. There is somebody paying attention to how you're feeling. Yeah. ये बड़ा मिसिंग हो जाता है. वी आर टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड. अरे वो तो अब तो सो कहते हैं ना, अब तो शादी हो गई. स्टार्टिंग फ्रॉम, मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आई आस्क्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन कि you had joined gym 3 months before, going to before your wedding. Suddenly तुमने छोड़ दिया. अरे अब तो होगी ना शादी. So what was that? Was it just for the lehenga fitting? Like, yeah, or was so it like to? So why these tiny little goals? I think partners need to talk to each other. What do you appreciate in me? What can I offer you? What in me attracts you? So that can I keep working on that. Now this is no way to say, oh, you have to woo your partner only. अब यहाँ पे ना एक pseudo feminism वाला angle आ जाता है कितनी बार. I said this is true for the male counterparts also. They should hold the same conversation. What in me attracts you? Let's talk about that. Together, what we should do. पता मैंने couples में ये सुना है कि लोग कहते हैं कि you should have common goals. ठीक है, तो you stay attached. I believe that vision. It's more important to have common values. So for me, shared values are a lot more important than shared goals. Shared habits. ठीक है, आप वो बास्केटबॉल नहीं खेलते, मैं खेलता हूँ बास्केटबॉल. There is no shared habit here. But you and I both believe in playing fair game. This is my common value. Sports. So कि हम cheat नहीं करेंगे इस गेम को खेलते हुए, चाहे कोई भी गेम खेलें. So shared values are a lot more important than shared habits for me. ये वाली conversation ना बड़ी missing होती है शुरू में. Hardly you start dating, I do not see people talking about what is your ideology, what is your belief in God, what is your political taste. Lot many battles took in the name of the husband is not supporting this party but the wife is supporting that party. तुम उसको वोट कैसे दे के आई, तुम उसको, so you are capitalist, you are leftist. इन चीज़ों पे हो रही है. So values, अगर आप values पे common ground पे हो ना कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चीट नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कि कोई गेम के अगर खेल रहे हैं हम लोग, तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत हमें लेके आनी चाहिए था अस वाला चैप्टर में. ऑफ कोर्स आई हैव माय ओन माय पर्सनल लाइफ, बट दिस इन टोटलिटी, व्हाट शुड आवर डे लुक लाइक? रोमांस हैज गॉन आउट. रोमांस इज लिमिटेड टू द डेटिंग पीरियड ओनली.
something needs to be done big time to make the relationship long last. Whatever needs to be done, like rekindling romance should be a proactive step that couples should be taking in a relationship. कि मुझे ना अपने रोमांस को स्पाइस अप करने के लिए ये चीज़ें करनी है. कोई सोचता नहीं उनके बारे में. They are all like on the back burner. We happen to read about them once we are going through those problems. But proactively, you have to kindle romance. You have to feel that I am loved by this person. You know, love demands reciprocity. If only one person keeps loving the other person, there will be a time वो बोलेगा कि मैं क्यों कर रही हूँ यार इसको प्यार. मुझे तो love demands reciprocity. So yeah. And what are modern relationships for? Like, I remember back in the day, some people would say that relationships is a must down the line. If you don't want to do it like at younger age, later में करना पड़ेगा because you need a partner to live your life through, right? Like that's something which you say. Ask yourself, this is my genuine advice to everybody, more so youngsters. Just because your parents want you to get married, do not get married for the heck of them. If the biological clock keeps ticking and things go as per, vidhi ka vidhan, parents will leave this planet someday and we will be left. And मैं ये नहीं सोचना चाहता कि आज मैं जो लाइफ जो झेल रहा हूँ, if I land up with the wrong partner, it's because my parents wanted me to get married to somebody. Yeah, very good. अगर एक गलती हो रही है तो वो मेरी गलती हो, ना कि किसी और की गलती हो. दुख तो तब ज़्यादा बड़ा होगा ना कि मैं पूरी लाइफ के लिए बोझ झेल रहा हूँ और वो मैं चाहता नहीं था, कोई और चाहता था, और जो चाहता है वो देख नहीं रहा, वो तो चला जा चुका है. मतलब इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती. गेट मैरिड बिकॉज आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, हाँ आई वांट टू गेट मैरिड, एंड गेट मैरिड टू द पर्सन कि हाँ इसके साथ इसलिए शादी करना चाहता हूँ. वरना अगर आप किसी के साथ भी शादी करने को रेडी, देन आई एम डाउटिंग यू एज अ पर्सन कि वेयर विल यू लैंड अप, बिकॉज देन यू आर नॉट गुड फॉर द अदर पर्सन. आई एम वरीड अबाउट द अदर पर्सन देन. रिलेशनशिप इज somewhat similar for me. I would ask myself ki, by being in a relationship, is it helping me or bothering me? If it's bothering me, I will stay away from relationship. Only if I feel the need and if there is a help that is coming. I have emotional needs. I have physical needs. I have intellectual needs. कि मुझे एक partner से चाहिए जो इतना समझदार, इतना smart हो, etc. etc. A relationship should make your life easier, not the other way around. So if you are better off being single, enjoy being single. वो जो पहले की सोच थी ना कि कर लो सही टाइम पे, फिर बुढ़ापे में अकेले का सहारा. I ask my parents today, what if I abandon you? मैं कहीं और जाके रह रहा हूँ. मेरी सोसाइटी में बहुत लिमिटेड, like I live with my parents contrarily live with me. They have moved to Gurgaon, that's where they live with me. But in the society that I live, there is hardly anybody who would be in his 30s or early 40s जिसके साथ पेरेंट्स रह रहे होंगे. They are all living in a nuclear life. The parents are living somewhere. तो मैं कह रहा हूँ उनका भी सहारा के लिए कोई है नहीं. Lot of youngsters are living in the US or the UK, Europe, Australia, etc. So आप एक मिथ लेके चल रहे हो कि हमारा सहारा कोई है. I think so what I will do, अगर मुझे कोई सहारा चाहिए, I will earn well. I will have servants, somebody to take care of me. If I am not able to deal with relationship, if relationship in my mind is a big headache, I will stay away. Because मुझे burden कम करनी है, बढ़ानी नहीं है. And if all that I need can be solved by my domestic help, XYZ people, then I'm very happy with them, rather than waking up every morning and thinking यार मैं relationship में क्यों आ गया. All kinds of people exist. So that relationship to me, if I have to sum it up, it's sharing lives with each other to bring that wholesome feeling that deep down any being, even animal being, would like to experience. It's a very wholesome experience which you get when you share lives with each other. In the sense that if you're not together, how are you gonna share lives, or how are you gonna live through that journey? You're like just texting each other, ye hua wo hua. Then necessity is the mother of invention, and I think especially in the whole digital world that we are better off living this long distance relationship today versus how we would have lived some 30 years back.
See, if we see this from an ancient era, men would go out on wars for months and years and return back home. आर्मी पीपल जो सरहद पे हैं पता नहीं कितने महीनों तक, को साल में 2 बार छुट्टी मिलती है. दैट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. सो आई एम नॉट सेइंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का मतलब ये आप कभी ना मिलो, पता नहीं कितने साल निकल जाए. नहीं, एवरी क्वार्टरली, एवरी 6 months. Can people have a fruitful relationship in which the guy is in the US and the girl is in India? Yeah, you meet 3-4 months later, even for those 2 weeks. But can you get done with this? Of course. अगर आपको अपने करियर को इंपॉर्टेंस देना है, 4 साल की इंजीनियरिंग है, लेट्स टॉक अबाउट दैट सॉर्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस. इट कैन बी फॉर एवर लॉन्ग डिस्टेंस. आई मीन इट्स डिफिकल्ट, बट इज इट डूएबल? या जिसके लिए जो काम करना है वो डूएबल है. एस्ट्रोनॉट्स अपनी वाइफ्स को फ़ोन कर रहे होते हैं या हस्बैंड्स को फ़ोन कर रही होती हैं नीचे. 6-6 महीने तक. हाँ, देर आर पीपल हु आर गोइंग, हु हैव गॉन. तो मरीन मर्चेंट नेवी, आप 6-6 महीनों 5-5 महीनों वहाँ पे हो. देयर इज समबडी हु लिव्स इन माई सोसाइटी हु गोज टू रशियन में तेल के कुएं हैं, वहाँ पे जाके वो काम करके आ रहा होता है. एवरी मंथ ही फ्लाइज एंड देन एवरी मंथ लेटर ही कम्स. सो अ गुड पार्ट ऑफ इज लॉन्ग डिस्टेंस. ही लिव्स विथ हिज फैमिली फॉर 2-3 weeks. आई थिंक इट्स ऑल मैनेजेबल एज लॉन्ग एज आप प्यार करते हो एक दूसरे को. दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड कॉल्ड लव. ये आपसे इतनी चीज़ें करा सकता है जो कई बार लॉजिक नहीं करा सकता है. There is a different level of passion about love. So as long as you love each other, as long as you need each other, as long as you respect each other, as long as you do not take each other for granted, you understand, you make things work. आपकी अपनी अलग अरेंजमेंट हो सकती है, एंड दैट अरेंजमेंट नीड नॉट फॉलो अ सर्टन अरेंजमेंट की सोसाइटी क्या कहती है. इट्स योर पर्सनल थिंग, यू डिसाइड. लॉन्ग डिस्टेंस में कैसे आप, कोई दिन में उठ रहा है, कोई रात को उठ रहा है, वहाँ पे टाइमिंग का भी डिफरेंस है. व्हाट इफ यू हैव अ किड? वेयर देयर इज अ विल, देयर इज अ वे. I genuinely believe in this. If you want to make the long distance work, it will work. If you do not, is it challenging? Yes. But क्या आपने बहुत सारे चैलेंजिंग काम नहीं किए? आपने किए हैं, आप करोगे. स्टार्टअप चलाना मुश्किल काम था, चैलेंज क्यों किया? लोग कहते हैं ना कि यार चप्पलें घिस गई मेरी. किसने कहा था? जॉब थी ना, पर क्यों किया? बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट दैट. आपको नींद नहीं आती थी. That's the whole idea. If you correct me if I'm wrong, but what I feel is that the digital, like so much of digital exposure is corrupting the mind. I'll correct you because you said correct me if I'm wrong. I do not think that technology should be blamed. Technology is only enabling you to do what you had wanted to do. Okay, interesting. अगर इस रूम में, अगर मैं एग्जांपल दूं कि whatever, like let's go to the example जिसमें स्कूल किड्स बात कर रहे थे कि भाई वो बहुत हॉट है, ये वो. आप कह रहे हो कि मुझे एक डेटिंग प्लेटफॉर्म पे आई स्टार्टेड टॉकिंग, या मुझे इंस्टाग्राम पे एक नया डीएम आया, द गर्ल वाज ब्यूटीफुल और द गाय वाज सो हैंडसम, सो आई मूव्ड ऑन फ्रॉम ए पर्सन टू बी, एंड आई एम लाइक मल्टी चैटिंग विद डिफरेंट पीपल. आई सेड निकाल दो टेक्नोलॉजी यहाँ से, लीव अपार्ट टेक्नोलॉजी. There's no Instagram, and there is you, and then there are these 5-6 different attractive people, and you have the option कि अगले 1 घंटे तक, आयुष, I'm just taking your example, not that I mean anything, कि आयुष तुम्हें यह वरदान मिला है कि अब तुमने इन 5 लड़की जो कि गॉडेस दीवा हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कितनों से बात कर रहे हो, लाइक फॉर नेक्स्ट 1 hour. There is no technology यहाँ पे, बस वो एक वरदान है. And it will make you do, if you really want to do, you will. And I'm not saying कि बात करने में कोई बुराई है, but I believe in this. It's very why do we blame technology? Because it's so easy to blame on something else than our own selves. Human beings are tuned to this. मेरी गलती नहीं थी, मम्मी, छोटे भाई की गलती थी. छोटा भाई, मम्मी उसकी गलती थी. ये बचपन से है, ये हमारा नेचर है. टेक्नोलॉजी बोलती नहीं है वापस, वो बेजुबान है. पर टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री होती है, उस पर सारे फुटप्रिंट्स रिकॉर्डेड होते हैं. सो वी ब्लेम इट कि यार डेटिंग ऐप सक.
ये सुनता हूँ मैं. It's a platform meant to make two people meet. That's it. How does the app suck? It brought you two together. Whether आपकी नहीं बनी ना उसके साथ. The job of the dating app was not to produce a human being who you would like and fall in love and stay in love. It's very easy to say यार ये काम नहीं किया. True. तो मुझे तो लगता है कि this is my vision of looking at technology. तो अगर मैं इस विजन से डिजिटल को देखूं, हर एक चीज़ को देखूं, तो मेरा नज़रिया है कि यार आपका लेंस अलग है. हाँ, मेरा लेंस अलग है. ये मेरे फ़ायदे के लिए बनी है, पर ये चीज़ मुझे नुकसान तब कर सकती है अगर मैं खुद उस रास्ते पे चले जाऊंगा. For every virus there is a new antivirus, and for every new antivirus there is a new virus. That's how this business of virus and antivirus is into the play. अगर चोर नहीं हो तो पुलिस क्या करेगी यार? पुलिस को भी तो चाहिए कि चोर हो. तो वो हर चीज़ें इकोसिस्टम बैलेंस ऐसे ही हो जाता है. And you had mentioned that, when you were going out with the first book, nobody was willing to take it, right? Like you were rejected by left, right, center. Any publishing house, you would go to them, they would say no. And then you started a publishing house of your own who would just work on first time authors, right? Like you wouldn't take the second time. Your book is also not published by your own publishing house, which is true. Really interesting. So just want to understand what is this side of the business, because it's like किसी को पता नहीं होता है कि how do these guys make money and how does the distribution know. And I'm curious about this because I have studied a little bit about it. Like a few of our creators wrote books, so because of that I got to know कि this publishing house charges 90% of the the amount that the sale is getting, and 10% is with the author, which does not make any sense to me at all. When I got into the world of writing, I'm not sure if you are aware of the story why I got into the world of how I became an author. Of course I know. So I had not read a single book. I started writing first. I wrote my first book, and then I got in the world of reading. I didn't even know who are the publishing houses operating in our country, how many of them. So I would go to a bookstore, and now this look at the logo. Look at the logo ki spine pe so the book has got this spine. What logo is this? There's a penguin here. Okay, so is penguin something? There is a rupa, R likha hua rupa ka. That's how I started. I used to make a list, and this is the time jab not all publishing houses were digital also. Some of them were still asking manuscript. You print and courier them. अब तो easy हो गया. So that's true. 10% royalty is a standard. It has come to 7.5 now. Wow. Lot of things from books, fiction world has moved on to digital. So people are reading less these days. I'm talking more about fiction and watching a lot more. Correct. The book world is making a shift from reading to getting adapted. Yeah. So Bollywood is buying content. A lot of creators are writing books these days. I've seen them, their videos. They get crazy. Oh, I'm the number one best-selling author. And I feel good. See, what is the difference? I'll tell you what. 10,000 I'm very happy that they are writing books. Yeah. I'm telling you, and without any comparison, the difference between both worlds. There's a creator who becomes an author, and then there's an author. So creator has got why is publishing house showing an interest in creator writing a book? Because same thing, numbers. You know that अच्छा इसके इतने followers हैं, मतलब अगर 10% भी करे इतने लोग तो खरीद लेंगे. So most of the publishing houses will not even go about कि whether this person writes good or not. वो तो हम करेंगे. Just lend us your name for that matter, and we'll bring a book out. Oh, you are running on television doing this reality show. Let's have a book. For so many Bollywood people, creators, everybody, getting a book out in your name is a intellectual statement. It's an intellectual statement कि मैं सिर्फ creative नहीं हूँ, मैं intelligent भी हूँ. There's something, I have got wisdom. Okay. Lot of Bollywood actors, when I started writing and books came out and I would do book events and launches, they would reach out, write a book on my story. I said, I don't write books like that. I have to believe in story, and if I find it good enough, I will write. Most of my early books were autobiographical in nature, and gradually I moved to the sphere of fiction. So why creators or
entrepreneurs or anybody who is a public figure would like to have a book in his name, it's an intellectual statement कि मेरे पास दिमाग है और मैं उस wisdom की बात कर सकता हूँ. ठीक है, मुझे अपने शायद विजिटिंग कार्ड में डालना है, नीचे सिग्नेचर में लिखना है कि आई एम ऑथर ऑफ दिस बुक, क्योंकि समहाउ दैट आपने जितने भी, अब मैं बात करता हूँ कि आप कहीं से भी आओ, मान लो एक अनपढ़ गवार भी इंसान आ गया, बट वो लुई विटॉन पहन के बैठा हुआ है, बट उसके पास इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस नहीं है. इन द सेम society where everybody is, let's say, Ivy League, earning the same amount of money, this person will feel, yaar, I haven't arrived, this is not meant for me. And suddenly somebody says, no, you talk wisdom, you talk about God. And suddenly you feel, अरे वाह, मेरा भी लेवल ऊपर चला गया. तो बुक्स ये करती हैं. मैं एकदम क्रूड सच बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे होता है. फॉर somebody who's an author, वो मूव करके आया, उसका नाम भी किसी ने सुना नहीं होगा, लेट्स से. उसकी किसी ने किताब पढ़ी, फिर पूरी स्टोरी पे इंडल्ज हुआ वो. इमेजिन द अटेंशन स्पैन ऑफ रीडिंग 200 पेजेस. आपने वर्ड्स के थ्रू, नॉट वीडियो, नॉट पिक्चर, वर्ड्स के थ्रू उसके दिमाग में एक इमेजिनेशन बनाई. आई एम टॉकिंग अबाउट फिक्शन हियर. इफ इट्स अ नॉन फिक्शन बुक, आपने उसको इतना इंटरेस्टिंग ज्ञान दिया कि ही और शी वॉज हुक्ड ऑन टू द पेज. फ्लिप पेजेस, 200 पेजेस ख़त्म करने के बाद इमेजिन हाउ स्लो इज़ द प्रोसेस जिसपे वो एक इंसान ने कहा, सुन ये किताब पढ़ना, ये अच्छी है. द बुक मूव टू somebody else and then somebody else and then lot of people and then they all started finding where is this author available, कहाँ पे है ये, फेसबुक पे है, ऑर्कुट पे है. मैं ऑर्कुट के टाइम की बात कर रहा हूँ, 2007 when the first book came out, 2008. It's a different phenomena, non-digital, in the physical real world कुछ होके वहाँ पे आ रहा था. तो मुझे ना ये डिफरेंस लगता है, the need to write book to become an author versus, oh, you are anyway famous, you must write a book. Yeah, it's different. That's what's now happening. Here is my challenge. How many of creators will go out to bring 5 different books and all of them will be a bestseller? Because you know what's going to happen? अगर मैं किसी का फॉलोअर हूँ, अगर तुम बहुत फन्ने खा क्रिएटर हो, ठीक है, ओ आयुष को मैं फॉलो करता हूँ, आयुष हैज़ रिटन बुक, आई एम ए डाई हार्ड आयुष फॉलोअर, मैंने आयुष की बुक ले ली, पढ़ना शुरू किया, अरे यार उसके वीडियोज़ अच्छे हैं, ये तो बहुत इंडल्जिंग है, उसके वीडियो तो 30 सेकंड्स के होते हैं, 1 मिनट के होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ये कौन पढ़ेगा, मुझे नींद आ गई है, छोड़ यार. उसको अच्छा फील कराने के लिए, अच्छा मैं क्यों कराऊंगा, अगली बार फिर आयुष की नई बुक आई है, अच्छा मतलब आयुष पब्लिक इवेंट में आएगा, अच्छा ये मेरे पास सेल्फी लेने का मौका है, ऑटोग्राफ भी ले लूँगा या ले लूँगी व्हाटएवर, तो आयुष सर मैंने आपकी बुक लिया, ये लिया है, तुम्हें खुश कराने के लिए, बिकॉज इन दैट 30 सेकंड ऑफ तुम्हारी खुशी मुझे एक मौका मिलेगा खुद खुश होने का और सेल्फी लेने का, तो मैं कर लूँगा. My real thing is, are you consuming that content? See, book is a content, video is a content, podcast is a content. Are you consuming? If as a creator, I'm creating variety of content, but people like a particular category of content, of course you experiment everything, but you come back to this. So you are known for this. As a creator, you may write a book. You do not become technically you're an author, but people will not celebrate the author in you. Correct. You are actually, if you're reading fiction, you're actually watching a movie unfold in your head in which you are the very protagonist. आप मूवी देखोगे तो रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण का हाथ पकड़ रहा है, लेकिन अगर पढ़ रहे हो ना किताब, एक लड़के ने लड़की का उस हीरोइन का हाथ पकड़ा, आप खुद को इमेजिन करोगे. बहुत सही बात बोल रहे हो. हाँ, तभी that's why sometimes when you read non-fiction books, like Atomic Habits, let's say for example, or any business book, it's difficult to imagine, like because you have not done it, you're learning something new, so you're trying to imagine कि कैसे हो रहा होगा या कैसे कर रहे होंगे, and that's what said that, you know, learning is a little difficult. Like this effort that goes into learning, because you have to read it again and again and again, and then when that imagination comes to your head is when you learn that, and then you go to the next thing. Am I making sense? Yeah, that's what happened, right? Yeah, it is. Nice. चीज़ें ऐसी होती थी जब बचपन में जो कहते थे ना एग्जाम, तो मम्मी कहती थी कि लिख के याद करो. एक बार खुद लिखो. लॉजिक नहीं बताते ना, वाई नहीं बताते थे. आपने पहली बार वाई बताया, सोचो 23 साल की उम्र में आज पता लगा लिख के लिखना चाहिए, सीखना चाहिए. सो इट बिकम्स, आपके दिमाग में इतना अच्छा एंकर कर लेते हो ना, क्योंकि आपकी अपनी इमेजिनेशन के साथ आपने कुछ किया होता है. वो चीज़ जो आप समझते हो, आपका सिस्टम जैसा वायर्ड है वो समझता है इस तरह से. वो तो आप टीवी पे कुछ देख रहे हो, किसी और ने कैसे विजुलाइज करके एग्जीक्यूट किया वो देख रहे हो.
So that's a The beauty. audiobooks should also work then, because audiobook I'm being fed the audio and then I'm still imagining. Like I always used to think कि पढ़ना वर्सेस ऑडियो बुक जल्दी से सुन लेना, क्या करूँ? ऑडियो बुक सुनने लगता है बुरा लगता है यार, कुछ तो शॉर्टकट ले रहा हूँ जीवन It is में. still better than watching something. Yeah. See, मुझे लगता है कि तीनों फॉर्मेट है. Consume all. My idea is not to shut something. Of course, the brain also needs entertainment. You should watch something, but at the same time, you should listen to something. You should read something. Audio will also make you visualize, as long as you are so focused to that. Um, Reading is a more engaging exercise. It's just you in that moment. ऑडियो भी आप 10 लोग सुन सकते हो इकट्ठे बैठ के. देयर इज अ ब्रॉडकास्ट, रेडियो सुन रहे हैं लोग, एक कार में जा रहे हैं. रीडिंग इज लाइक यू गिव समथिंग एंड यू फेच समथिंग बैक. इट मेक्स यू एक्ट on that one line. When you underline something, मैं तो कहता हूँ कि पन्ने फोल्ड करो, ये करो, make that copy. So I tell my readers that when they give me books to sign, I said okay, ये तुमने मेरी कॉपी अपनी बना ली है, क्योंकि अब उसमें अंडरलाइन कर दिया है, दिल बन गया कहीं पे. मुझे लगता है कि आज हम सब कुछ स्क्रीन पे ही कर रहे हैं. एक चीज़ तो है जो हम फिजिकल वर्ल्ड में कर रहे हैं, जो कि हमारी आंखों पे जोर नहीं डाल रहा है, जिसके पन्नों की हम खुशबू फील कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ स्लाइड करके रख सकते हैं, उसके जो पेल पेजेस हो जाते हैं वो एक नॉस्टैल्जिया लेके आते हैं. एंड that freshness of a brand new book, you carry that. Yeah, I like the at the airport. You make a statement, oh this person is reading. मुझे तो वो बहुत सेक्सी लगता है. That's true. एक हाथ में बुक लेके जाना बड़ा सेक्सी लगता है. और मैं कहता हूँ कि अब ले ही ली है. Statement है वो. हाँ. तो जैसे ना मैंने कहीं पे एक रील बनाई थी कि यार एक टाइम पे कॉलेज में लड़के इंजीनियरिंग का सेमेस्टर के बाद ट्रेन लेके जा रहे थे तो गिटार रख लेते थे साथ में. मैंने कहा गिटार बजाना आता भी नहीं है. मैंने तो फिर रखी क्यों है? कूल लगता हूँ गिटार के साथ. तो मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअली कूल लग सकते हो अगर आप चश्मे की तरह होता है. पहले चश्मा बोलते थे, चश्मा पहनता है स्मार्ट होगा. ये पढ़ा लिखा लड़का है. So what is your one advice to somebody who is at a space where they know that they have lost their attention span? They want to get back into the habit of not just reading but like the habit of focus. I think focus today is one of the की स्किल्स टू सक्सेस. एंड वो तो है ही नहीं हमारी जनरेशन में. फोकस तो ही नहीं पता है. मतलब अभी मैं यहाँ पे पॉडकास्ट ले रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा होगा अरे ये भी करना है इसके बाद, उसके बाद वो करूँगा. एंड देन जब उससे बात कर रहा हूँ मीटिंग में, आई हैव अ हैबिट व्हेन आई एम इन अ मीटिंग आई विल कॉन्स्टेंटली डू समथिंग एल्स. आई कांट नॉट डू इट. आई हैव अ कैमरा हियर एंड माई लैपटॉप इज हियर, सो आई विल बी लाइक या I can't not do it. I'm like trying to, like it's like I have to tell my brain don't do it. Listen to this guy. That what happens on Google Meets. Because I'm with my WhatsApp, I have access to my WhatsApp here. I just have you, I'm speaking to you, I'm listening to you, that's it. वहाँ पे तो मेरे पास WhatsApp भी है, फ़ोन भी है. ऐसे फ़ोन को उसके सामने नीचे से रख के या ऐसे कर दो तो लगेगा उनसे ही बात कर रहा हूँ. How do you deal with that? I don't know. This is a problem with me also to so many extent, but not this multitasking wala problem. I'll tell you what my problem is. I'm a very passionate person. अगर मैं कुछ नया कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में वो चल रहा है. I have started a new venture called Socialise, जहाँ पे मैं singles meet करा रहा हूँ. मैं सोने भी जा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अरे एक और पॉइंट याद आया, उसको नोट फटाफट आईफोन में नोट में लिख देना कि ये करना है, वो करना है, इस चैप्टर में ये करना है, उसका लिंक वो करना है. ये मुझे सोते समय हो रहा होता है. See, क्योंकि आप खाली होते हो ना. And I'm also trying to fix this in me. Couple of things that help are meditation. उस टाइम पे, एंड इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर मी. इट मे बी ईजियर फॉर समबडी, बट वो अपने दिमाग को 10 मिनट के लिए रोक पाना कि भाई कुछ मत सोच, और ये भी मत सोच कि कुछ नहीं सोचना है, ये अपने आप में इतना ट्रिकी है. दैट इज़ वन थिंग. दूसरा, कपल ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वर्क आउट विथ माई ट्रेनर, सो ही एंड आई वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन. आई वॉज टेलिंग माई ट्रेनर दैट अनिल यार, दिमाग का ये सा ना सब भरा रहता है कि ये दिस कितना सारा स्ट्रेस वहीं पे तो आता है. क्या सोचते हो कि और काम को कैसे बढ़ाना है, ये करना है. मैं हाँ कहते दिस इज़ वेयर द वर्कआउट रूटीन हेल्प्स यू इन डिसकनेक्टिंग विद दैट थॉट प्रोसेस. व्हेन वी आर वर्किंग आउट, वो मुझे गोल देता है 10 सेट्स, फोकस ऑन दिस मसल, ये पूरा 10 रेप्स में सिर्फ बाइसेप्स पे फोकस रखो. तो मैं रियलाइज करता हूँ कि उस 1 घंटे के लिए मैं अपने काम को भूल गया था, बिकॉज उसने मुझे नए गोल्स दे दिए हैं और उन गोल्स को इतने ही टाइम में अभी अचीव करना है.
आई कैन नॉट कीप होल्डिंग ऑन टू द डम्बल्स, दे विल फॉल अगर मेरा ध्यान काम पे गया. तो ऐसे काम जो कि अगर ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी वाली चीज़, ये मेरा फोकस मांगते हैं. ऐसा नहीं, फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग पे निकल जाऊंगा अगर मैं, ठीक है, अब ड्राइविंग पे मुझे फोकस रखना है वहाँ पे, तो मैं ऐसी चीज़ें करना चाहूँगा जो पुश करे मुझे डिस्कनेक्ट करने के लिए. वर्कआउट इज़ वन थिंग. इफ़ आई एम प्लेइंग लॉन टेनिस विद समबडी, मुझे पता है कि इफ़ द मोमेंट आई लूज फोकस, गई बॉल यहाँ से, तो मुझे 1 घंटे के लिए वो रूटीन करनी है. ऐसे काम करने हैं जो मुझे मल्टीटास्किंग की ऑप्शन ही नहीं देंगे. पुश योर सेल्फ टू बी अवेयर इन दैट मोमेंट कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, ये जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ ये मेरे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ये वाला जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ वो मेरी हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट है, ये मेरी हार्ट बीट्स को बढ़ा रहा है. आई एम ब्रीदिंग. जब मैं मेडिटेट करता हूँ कि ये सांस यहाँ टकराई, अब मैं उसी जगह पे जहाँ वो टकराई है वहाँ पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं इनहेल कर रहा हूँ, एक्सहेल कर रहा हूँ, छोटी मैं पूरी कोशिश करता रहता हूँ अटेंशन लाने की. अगर मैं कैब में बैठा हूँ एयरपोर्ट से, या इफ़ आई एम इन द फ्लाइट, आई विल ट्राई टू मेडिटेट इवन दो आई एम नॉट इन द सेम इन अ ग्रेट पोस्चर, but in whatever posture I am, my idea would be, can I just make my mind stand still? It's a work in progress. I'm doing something. If I give up, I think I'll feel horrible कि मेरे को पता ही नहीं है. I think the good thing is with these people who feel that attention span की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, is that they have finally realized that attention span की धज्जियाँ उड़ सकती हैं, कि उड़ चुकी हैं. Now that they are aware, that's step number 1. Lot many people are not even on step number 1. So I think it's a good start that, okay, now that you have acknowledged the problem in you, that's where the whole idea to solve it will come. Yeah, got it. But yeah. Understood, makes sense. So what is next for you? What are you currently working on? Something big for me. Let's Socialise. It's a platform on which I bring singles together in the real world. Okay. ये मैंने लास्ट नवंबर स्टार्ट किया था, एंड आई थॉट दैट व्हाई इज़ इट सो डिफिकल्ट इन दिस कंट्री फॉर सिंगल्स टू फाइंड अदर सिंगल्स. आर डेटिंग एप्स द ओनली वे, एंड डेटिंग एप्स हैव देयर ओन चैलेंजेस. बहुत तरह के चैलेंजेस कि मुझे पता ही नहीं कि यार, मैं खुद डेट पे गया 2 लड़कियों के साथ जो मुझे एक डेटिंग ऐप में मिली थी, एंड आई लाइक, बट यू आर नॉट दिस हु इज़ ऑन द ऐप. ये फोटो कब की है, लाइक 10 साल पुरानी. हाँ. सो एंड इट्स बोथ वेज. दोनों जेंडर्स को एक दूसरे के जेंडर्स की साथ प्रॉब्लम हो सकती है कि बट तुमने वहाँ पे तो ये लिखा था अपने बारे में, यू आर दिस एजुकेटेड, दैट बिकॉज माई फ्रेंड मेड दैट प्रोफाइल. एंड आई एम लाइक, आई हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर 2 weeks. आई थॉट आई एम टॉकिंग टू दिस पर्सन हु इज़ यू, बट यू आर नॉट दिस पर्सन. तो ये जो इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद, एफर्ट इन्वेस्ट करने के बाद जब चीज़ें नहीं होती है ना, फिर लगता है कि काश 2 हफ्ते बात ना की होती, 10 मिनट फेस टू फेस बात कर ली होती, इन फ्रंट ऑफ, इन ईच अदर्स प्रेजेंस, ह्यूमन, लाइक रियल वर्ल्ड में. एंड आई थॉट, व्हाई कैन आई नॉट डू दिस? बिकॉज divorces are rampant. People in my age, they are single again. People in 30s are pushing their marriages. Everybody is focusing on their career. Yes. People are moving domains also. जो लोग पटना बिहार में थे वो दिल्ली आ गए हैं. सडनली कोविड आया, दिल्ली से पटना वापस चले गए क्योंकि रेंट कौन पे करेगा. अब फिर वापस आ गए. तो जब दुनिया इतनी मूव कर रही है फटाफट, आप भी सिंगल हो, बट दे डू नॉट नो, दीज 2 people in my society do not know what is the common ground, how can they meet. सोसाइटी में सिंगल्स ग्रुप बने लग गए. अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है. अगर सोसाइटी में हो सकता है तो कुछ बड़े लेवल पे हो सकता है. एंड आई थॉट, लेट मी स्टार्ट समथिंग wherein I will invite singles. Let's do that. So I did the first chapter in the month of November, and then I thought अगले महीने फिर करूँगा in Delhi. अगले महीने फिर किया, फिर सोचा फरवरी में 2 चैप्टर्स करते हैं, और गुड़गांव के, दिल्ली के साथ गुड़गांव में भी करते हैं. दैट ऑल्सो वर्कड. आई सेड अब इसको बाहर लेके जाते हैं, चंडीगढ़ में करके देखते हैं, ताकि वहाँ रिस्पॉन्स देखिए. गाड़ी में ड्राइव करके तो जाना है,
that also worked. And then I thought Bombay करते हैं. We flew, I hired a team, Bombay worked. इतने every chapter has gone houseful. मतलब बॉम्बे मुझे याद है कि खार में हमने किया था, हमें लोगों को पैसे रिफंड किए, प्लीज़ गो बैक, छत से लोग नीचे गिर जाएंगे. वो भर गई थी छत 4th फ्लोर पे. अभी हम बॉम्बे में फिर से कर रहे हैं नेक्स्ट वीकेंड. सो I have done 19 chapters by now in past 3 months. Oh, that's a lot. Yeah, and we have made more than 1,500 people singles socialize, and this is good crowd. So we have a criteria. There's price point criteria. Good people turn up. People from Ivy League of college working in Google, Microsoft, they turn up. तो मुझे इस space में बड़ा kick आ रहा है. I'm now registering it as a private limited also. Oh, nice, congrats. This month it is getting registered, and then I have ventured out into 2-3 different properties of Let's Socialize. So Let's Socialize is something you pay and come. If you are single, there is an age criteria. If you fulfill that, you pay and come. Then I'm doing something called Let's Socialize Select, in which we screen the profile. A lot of people who turn up this way, तो 60-70 लोग आगे, which is good thing. But I want a more intimate setup. Few people come, but like you know, आप लोगों ने screen किया हो कि वहाँ पे कौन-कौन आ रहा है. So I did that. That is working. I'm doing something called Let's Socialize Elite, जो मुझे start करना है, which is for the HNIs. And then I'm now getting into a networking space wherein I will call, why just relationships? Why not other things? Networking for startups. I met somebody yesterday. He said, I'm from blockchain technology. Why don't you host these events for people who want to do something in this domain? For example, Gurgaon mein ho, Bombay mein, Bangalore mein. I said, I have big plans. It's just that this is first time I'm doing something of this sort. It is working, doing great. I am motivated to take it to the next level. Yeah. Nice. Apart from that, I'm writing a book which should be done. It's been a big break. I also run a publishing venture called Black Ink, which is meant for debut authors. So wahan se I sold a couple of books to Bollywood. My own book was made into a series on Hotstar earlier this year in January it came. What's it called? It's called Dear Ishq. It's a long format episode. So Hotstar is moving star television types content onto Hotstar. This is a long format. One season 40 episodes. Oh damn. Just like जैसे TV shows होते थे, तो उस तरह की एक series एक आई थी. Lot of things are happening in the publishing world in terms of Bollywood and that. But my heart right now is in Let's Socialize. It's when you see. So what I'm trying to do here is I'm trying to make socializing cool in this country. देखो, socializing with other people has gone down drastically. More so from the era of COVID when it started. ऑफिस जाना लोगों ने कम कर दिया. वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आ गया. ठीक है. तो मुझ जैसा इंसान जो एक टाइम पे व्हेन आई वाज वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट, that was my last job in 2013. I quit. I used to feel okay, मतलब इतने बड़े ऑफिस में इतने लोग हैं, if I have to meet people, there are so many people around. Conversations will take place around the vending machine. सुबह सुबह कॉफ़ी की मशीन पे अगर कोई सामने वाले क्यूबिकल से एक लड़की मग लेके जा रही है, then I can have a interesting conversation. It was very easy for me to, but in the silo of my home, it's very difficult. जहाँ पे socializing करना इतना मुश्किल है. To add to that, the bigger element is COVID when that happened. वैसे ही लोगों ने थिएटर जाना छोड़ दिया था. अब सब कुछ नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं. तो कहने का मतलब कि हम घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इतने वेन्यूज़ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हम लोगों से मिल सकते थे वो बहुत ही श्रिंक हो गई उस स्पेस. आई एम ट्राइंग टू मेक सोशलाइजिंग वेरी कूल. माई आइडिया इज कि इस वीकेंड अगर कुछ नहीं कर रहा तो लेट्स सोशलाइज के चैप्टर में चलते हैं. वहाँ पे 60-70 नए सिंगल्स आए होंगे, उनसे मिल लेंगे. यू आर गोइंग टू स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ मनी, हैव alcohol, have food, but with a whole bunch of like-minded people who have paid and who have come to meet somebody like you. Yeah, makes sense. So in every chapter what happens is singles का ना gang बन जाते हैं, WhatsApp group बन जाते हैं. They will make Let's Socialize WhatsApp 2.0, 3.0 because this person came in the chapter 3rd also. So, and then people send us screenshots, pictures. We all met in that chapter और आज हम यहाँ पे एक सिटी का एक नया कैफ़े खुला है, आज हम लोग ने वहाँ जाके मस्ती की है. और ये तो मुझे लगता है कि अरे यार दोस्त बना रहा हूँ, इन दोस्ती में से कहीं ना कहीं से रिलेशनशिप्स बन जाएंगे. देयर आर हैप्पी स्टोरीज. वुमेन हैव पोस्टेड दैट आई
met somebody in your chapter. So somebody said, I had come to meet you, Ravinder, and I told this person that, ठीक है मुझसे मिल लिए, but यहाँ पे बाकी the men who have turned up here, you should meet them. There are good men here. And then she met somebody, and then she wrote an email that I found somebody, and we have decided to go on coffee tomorrow. I was like, I'm very happy. And then this lady wrote to me 25 days later, I'm the same person who met you, and I went on a coffee date with somebody. I'm here to tell you that tomorrow is our 5th date. I was like, wow, things are working. So she told me, whatever you are doing, continue to do, because 1% Market people validation. वो होगा वो you can play Cupid, you know, somehow I can only bring, again, just like the dating app, I can only bring people together. उसके बीच में क्या होना वो आप करो. आप मुझे भी गालियाँ दे सकते हो, यार dating app sucks, let's socialize sucks. Of course everything can suck, but for me, somebody telling that everything else suck but not you, then I would say you suck. Your logic somehow just not adding up. क्योंकि आपके लिए tech भी कम पड़ गया, आपके लिए वो भी पड़ गया. Maybe you do not have things to attract, to hold on to something. So yeah. So my heart is in Let's Socialize right now. No, all the best for that. If you need any help, we're here to help. I'll definitely get in touch with you on how to take this forward. I can send Adarsh as a single guy there as well. There's a lot of supply of singles. We have something for you that we wanted to give. Oh, is it? Yeah. All right. Thank you. Bombay Sweet Shop. Thank you. Okay.